Your seats. Good afternoon, everyone, and good afternoon to all those who have joined us online. Friends, welcome to this Mission Prelims program. Now, you see that this course has been designed to help you perform better in the preliminary examination. Preliminary examination is a different cup of tea. It is not like the mains. And why I say so? Because in the prelims, the answer is in front of you. You have to identify the right answer or identify which is not the correct choice. Like say, for example, that for a particular question, there would be 4 options in the preliminary examination, A, B, C, D, and you have to identify one. But in the mains examination, you see, you have to recall, you have to use your concepts, you have to apply, and then you have to create an answer. So mains examination gives a lot of scope for you to portray your point of view in a particular fashion. But the preliminary examination does not give you that liberty. The preliminary examination is more or less the test of the range of your knowledge. Whereas the mains examination, apart from testing the range of your knowledge, also tests the depth of your knowledge. Got it? So in the preliminary examination, you have to develop a particular kind of mindset. So today, I will be talking about that mindset and why that mindset is the game changer as far as the prelims is concerned. But before I say anything, you must know some facts about the preliminary examination. Nearly 8 to 10 lakh aspirants, they fill the forms of UPSC Civil Services examination every year. But the good news is nearly 40 to 45% they back out. They never appear for the preliminary examination. So on an average, 5 to 6 lakh students appear for the examination, though this number may vary from year to year. But generally speaking, 5 to 6 lakh students appear for the preliminary examination every year. And out of that, you see, only 10,000 to 13,000, and this number may also vary from time to time, actually make it through the preliminary stage and go to write the civil services main examination, which is the actual meat of the entire examination. So preliminary examination is more or less a filter stage where the best is separated from the rest. Doesn't mean that if somebody fails to qualify the preliminary examination, doesn't deserve this office, but the point is that those who clear the examination, preliminary examination, they generally know the art of clearing the preliminary examination. So look here, in the preliminary examination, what are the common mistakes that people commit? The first common mistake is that they feel the preliminary examination is all about current affairs. Now that's a very fatal mistake that anybody could commit. Current affairs definitely play a vital role in the preliminary examination, but it is not the only area where you should have good hold. In fact, current affairs is a diabolical section. And why am I saying it's diabolical? Because you cannot be sure about that area. That's the first mistake. And I'll tell you how to rectify these mistakes. Second is, people take the CSAT very lightly. And that is criminal on your part, because you see that I know so many aspirants, and every year they come to me after the preliminary examination, scoring good, handsome in the GS, but not so good in the CSAT section. Why? Because they feel that only 33.33% marks are required to qualify the CSAT examination. It is a qualifying paper, and once you achieve that, that would be enough. And they think that with their little preparation, that would be enough. But I have even seen people with engineering backgrounds struggling in CSAT. It's not because they do not know how to solve the question. CSAT is more or less a race against time. Now look here, UPSC over the years, it has been observed, is increasing the quality of questions in the CSAT. Sometimes the questions are easy. If the questions are easy, maybe the number of questions would be more. Like say, for example, in a paragraph, UPSC can give 4 questions, 5 questions, depends, right? So the number of questions would be more if the questions are easy. If the questions are moderate, then the numbers will drop down. The entire idea is to
eat away the time of the aspirants in the examination hall. And when you take CSAT lightly, what happens, you know, that it creates that kind of hurdle as far as the preliminary examination is concerned, that you develop a kind of phobia with respect to the civil services preliminary examination. In fact, आपका CSAT पेपर जो है वो पहले चेक होता है और उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का GS पेपर चेक होगा. Logistically, it makes sense. It is common sense, because if I check the GS papers of everybody first and then I check the CSAT papers, it is not going in tune with common sense. Common sense says that first the CSAT papers would be checked, and those who are qualifying CSAT, their GS papers will only be checked. So that's the second mistake. First mistake is current heavy preparation and current obsessed preparation. Second is neglecting CSAT, or the civil services aptitude test, though UPSC calls it paper 2, but aspirants call it aptitude test. And the third major mistake is lack of revision. So keeping these three areas in mind, this program has been designed. Now look here, what we will do under this program. From today onwards, for the first 4 days of every week, we will be covering 2 subjects parallelly. And in the civil services examination, you must develop this multitasking ability as far as preparation is concerned. अगर ऐसा है कि जब आए थे तब भी लक्ष्मी खान था आज में और आज भी है, तो कल भी रहेगा. समझ में आ रहा है? तो आपको चाहिए कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ना सीखें. I understand pushing all the subjects immediately would be troublesome, but at least we can carry 2 at a time. So that makes perfect sense. So 2 subjects, first 4 days, there would be more or less a kind of quick revision of the hot spots in those areas. This is not a foundation class. So there is a presumption that has been made while the teachers, they deliver their content in the class. And the presumption is that you have already covered the subject once, at least once, though this could be more than once as well. And the second presumption is that we will be only touching those areas which make more sense as far as the examination is concerned. The formula in the Mission Prelims program is not exhaustiveness, because if we follow the principle of exhaustiveness, you know, even 40 days will be insufficient to cover even ancient Indian history, because that's the depth of the subject. The point here is the principle that we are going to follow in the Mission Prelims examination is relevance as far as the examination is concerned. A research team has done intense research of the previous year's question papers and the analysis, the trend of the examination across the years, and have discovered certain hotspots in every subject. So those hotspots will be the focus area in this course. Also, you see that no dictation would be made to you. And as far as doubts are concerned, in and around the concepts, for that doubt counters will be arranged, because if the teachers start handling doubts in the class, you understand 4 days would be insufficient to cover any subject. So the idea here is to push you on a mission mode. आप समझते हैं mission का मतलब क्या होता है? Mission means that there is a pressing objective which you need to achieve in a limited time period. Do you understand that? And for that, you have to always put your foot on the accelerator. You cannot take your foot away from the gas pedal. So that's why you see that if there are any doubts in and around the concepts, for that doubt counters will be arranged, and you can always access those doubt counters and clear your doubts in and around those areas. After every class, like say for example today we are having 2 classes. First class would be modern Indian history, the second one Indian polity. After every class you will be given a practice booklet, which would be a self-practice booklet which will carry 25 questions. Do you understand that? Those 25 questions will emanate from the topics that have been covered in the class. Do you get that? So you should try to solve this on a daily basis. So after 4 days, you will solve how many questions? If there are 2 subjects running parallelly, and after every class you get 25 questions, 200 questions. Do you understand that? So the first 4 days of the week will move in this fashion, and the last 2 days of the week, because one day has been
given as rest. Last 2 days of the week would be a full-length test on the subject that you have covered. Do you understand that? So in a week, you will be doing how many questions of a particular subject? 200 questions. In total, you will be doing 400 questions. You will be covering 2 subjects. These questions are created from those areas which the team considers as hotspot sections. But again, there is a disclaimer. See, this is a revision batch. So there is the presumption that you know already few things. Like, so for example, in the class, maybe the teacher would just discuss about the Gandhi-Irwin Pact and the highlights of the pact, or the cabinet mission plan, or maybe just few things around inflation, few things around fundamental rights. But what is fundamental rights? It's not possible to cover in this class. Do you understand that? Otherwise, you know, मैंने तो कितने classes लिए fundamental rights पढ़ाने के लिए, impossible है. So you can understand that it is impossible to cover those areas. See friends, the entire idea of this course is to prepare you for the examination day. Preparation for the examination that you have done in the foundation courses and through your personal preparation, self-preparation. ये बस आपके performance enhancer की तरफ है. जैसे आपको पता है लोग whey protein खाते हैं, ठीक है, supplements खाते हैं. So ये supplement की तरह है, as a mass gainer. Do you understand that? So that nutrient deficiency ना हो जाए आपको कहीं पे भी. Got it? So once we are done with the basic areas, it means the basic subjects like say modern Indian history, ancient Indian history, medieval Indian history, Indian economy, geography, polity, etc. Once we are done with those areas, there will be some dedicated classes. Like one of them is purely on map marking. You see that if there are say 10 to 12 questions from geography every year, you will see nearly 2 to 3 questions are from map marking. तो मैप मार्किंग 2 तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली. एक तो बेस्ड ऑन दोज एरियाज व्हिच आर करंटली इन न्यूज, लाइक से फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड अबाउट नागोर्नो कराबाख? तो वेयर इट इज, हो सकता है ये आपके आ जाए कोई न्यूज में. या तो फिर जो हॉटस्पॉट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, these are the areas from where you will get 1 or more map marking questions. Do you understand that? तो मैप मार्किंग पे कुछ डेडिकेटेड क्लासेस होंगी. देन देयर वुड बी सम डेडिकेटेड क्लासेस ऑन स्कीम्स, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स. And you see, mostly people feel that schemes that have been released in the past 12 months make sense. But if you look at the UPSC question papers, you will find that they have asked questions about schemes that were released 2-3 years back as well. So we must keep this in mind. And that's why a comprehensive design of schemes have been made here for this course. And we will be covering all the relevant schemes that make sense as far as the preliminary examination is concerned. That would be the second dedicated module. The third dedicated module would be on budget and survey. अब देखो इकोनॉमी में अगर 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 आप समझ लो सीधा बजट से आएंगे या सर्वे से आएंगे, ठीक है. और इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने नहीं पढ़ा है फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, देन you have not only committed a crime, but you have committed a sin. Do you understand that? So you cannot leave economic survey as far as the examination is concerned. Then the fourth dedicated section would be on current affairs. देखो अब मैं सबसे पहले उस पे आ जाता हूँ कि मैंने आपको बोला था पहला मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं. और क्या करते हैं, वो साल भर तो पढ़ते नहीं करंट अफेयर्स. आपको पता है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम हिंदू बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, बट इट डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. It becomes more or less a part of your day-to-day activities, Indian Express, The Hindu, and all those kind of newspapers. And mostly, these newspapers are comprehensive in nature. They make good sense as far as the mains examination is concerned. But in the prelims, you do not understand which areas are relevant and which are not. Do you understand that? So, current affairs जो है वो sense बनाता है हमारा जब हम basics cover कर ले. Now, look here. एक बात मुझे बताओ. How many questions in the GS section? 100 questions. Now you tell me purely current affairs based question कितने आ सकते हैं maximum? चलो आपको क्या लगता है? If you have seen the previous 5-6 years question papers, even those years where current affairs dominated, at max it would be 25, and you can check it if you want. At max बता रहा हूं मैं, ये maximum limit है purely current affairs related question. So how many questions are left?
75 questions. Now these 75 questions may have some overlapping of current affairs, but they are mostly emanating from the basics. Do you understand that? And what are these basics? History, Indian polity, Indian economy, geography, and environment and ecology. Science and tech related questions are mostly now current affairs based question. और current affair की भी अगर हम बात करें तो देखो current affair mostly इन 4 areas से आएंगे. सबसे पहले current affairs जो है वो कोई लॉ से रिलेटेड हो सकता है या कोई इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड हो सकता है. साइंस एंड टेक में कोई डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन, डिजीज इससे रिलेटेड हो सकता है, स्पेस से रिलेटेड हो सकता है, इस तरीके का आएगा. सम from environment and ecology which could be related to climate change or some summit related to climate change or any cyclone or any such kind of things. Do you understand that? तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन को लेकर कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा. अब जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसमें करंट अफेयर्स का तो स्कोप है नहीं. Do you understand that? So you must be very smart as far as current affairs preparation is concerned. अगर आपकी ये बेसिक्स सही हैं, then you stand a good chance of handling at least 75 questions very well. और अगर इस 75 questions में if you can score anything around 60 questions correct और 15 में मान के चल रहा हूं गलत हो गए, do you understand that? तो भी net correct जो है आपका वो 55 हो जाता है. That gives you 110 marks. Do you understand that? And 25 में अगर वैसे करना मत, बट अगर आंख बंद करके भी लगाओ तो भी लॉ ऑफ एवरेजेस 1/3 तो करेक्ट कर देगा, अनलेस आपकी किस्मत बहुत ही खराब है. You understand that? इतना तो हो ही जाएगा. So अगर आप 110 के आसपास आ जाते हो, then I'm not saying that selection is sure shot because that depends upon the quality of questions that year, the quality of competition, number of seats, all those kind of things. But you have a great probability of clearing the preliminary examination. जो 100 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं जनरली वो बहुत सेफ साइड में हो जाते हैं प्रीलिम्स के बाद, और वो मेंस की प्रिपरेशन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक समझ लो से करना शुरू कर सकते हैं. बट जो वही 60, 70, 75, 80, 85 ऐसे जिनके मार्क्स आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जीएस सेक्शन, दे फेस अ काइंड ऑफ डायलेमा कि करे या ना करे, प्रिपरेशन प्रीलिम्स की करे फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए या मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दे. और इस डिलेमा में करीब 40 डेज वो लूज कर जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट 30 to 40 days. That is generally the average time, but UPSC may also release the results earlier than that. It means the day of preliminary examination and the day of the results of preliminary examination. After that, you have around 60 to 70 days before you go to the mains examination. 60 to 70 days are not sufficient to sharpen your weapons as far as the civil services main examination is concerned. That's why you must give the preliminary examination in a resounding manner कि सारा डर हट जाए आपका मेंस को लेकर अब. Do you understand that? So at the end of these basic sections there will be the coverage of current affairs. और आप देखोगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो करंट अफेयर भी बहुत आसान लगने लगेगा. करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं एकदम प्योरली करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको 10 से 12 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे. बाकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनमें कोई ना कोई बेसिक एरिया से भी लॉजिक लगता होगा. Like say for example some economy related question or polity related question like this was in news, it affects which of the following fundamental rights. Do you understand that? So you must know the fundamental rights and then only you will be able to relate it to the current event. Do you understand that? So after every basic area that has been covered you will be given a booklet, like say for example this booklet for modern Indian history and this booklet for Indian polity. Now listen to this very carefully friends. This is not a substitution of the material that you have already accumulated over a period of time. This is a supplement. जैसे वे प्रोटीन होता है ना, जो वे प्रोटीन खाते हैं ऐसा है क्या कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं? नहीं है ना. तो ये एक सप्लीमेंट है, ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेगा and that will be given to you only at the end of the course and there is a purpose behind it. Why? Because अगर ये आपको आज ही दे दिया जाए so what you will do is you will keep looking at it and you will be again falling into the trap of
मटेरियल्स, और मटेरियल आपको पता है, आप बस निकल जाओ ओल्ड राजेंद्र नगर के मार्केट में, थक जाओगे, मटेरियल नहीं खत्म होगा। तो बहुत सारा मटेरियल आपने भी जमा करके रखा होगा, याद है ना, याद करो टेबल पे कितना कुछ रखा हुआ है और क्या पढ़ा है उसमें से सच में। इट्स वेरी, you only know the truth, right? You and your God knows the truth. So the point here is that we will cover these things in the class very quickly, and then at the end you will get this material. इस material को आप पढ़ेंगे and then you can come for your sectional test. So current affairs will be covered separately and it will start after some time. क्योंकि अगर अभी हमने current पे focus कर दिया तो दो गलतियां होंगी। पहली गलती ये होगी कि हम सारा करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट की क्लासेस खत्म हो जाएंगी और करंट अफेयर्स तो ऐड होता रहेगा, तो करंट अफेयर्स हम सारा नहीं कवर कर पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि अगर हम कवर भी कर ले तो आपको याद नहीं रहने वाला, बिकॉज करंट अफेयर्स इज इंफॉर्मेशन, वेयर एज दीज बेसिक एरियाज आर कॉन्सेप्चुअल एरियाज। कॉन्सेप्चुअल एरियाज में आपको एक तरीके का कंफर्मेशन है। Like say for example, if there is a conceptual question around cumulonimbus cloud, you can handle that, right? But if there is a factual question related to a particular program released by a particular ministry, maybe you know it or maybe you do not. If you know it, फिर तो बम्पर है आपके लिए, अगर नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट कॉन्सेप्ट वाले एरियाज में जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो गलती नहीं करेंगे। देखो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एक थंब रूल है, और सीख लो ये थंब रूल, वहां जहां सब सही है वहां आप गलत नहीं हो सकते, और जहां सब गलत है वहां आपको एक दो सही करना है। Do you understand that? तो कौन सा एरिया है जहां पे कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है? कोई भी निकल के ये बोल सकता है कि मैंने करंट के 15-20 जो भी क्वेश्चन आए हैं 100% मेरा राइट है? कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ऐसा दावा लोग करते हैं किसमें? इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, because these are those areas where they are sure short of the answer. Do you understand that? So that's why you must keep this thing in mind. And finally, current affairs. Along with that, we will also cover the CSAT section. CSAT is more about practice. But अगर वो practice हम ठीक से कर लिए तो CSAT में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। CSAT में लोग टाइम से हार जाते हैं। अगर मैं आपको CSAT का क्वेश्चन पेपर दे दूं और बोलूं 2 दिन है लेकर आओ, तो सबके सब 80 आउट ऑफ 80 करके आएंगे, लेकिन जीएस का दे दो तो नहीं कर सकते, गारंटी नहीं है। आर यू अवेयर अबाउट दैट? सो इट मींस दैट सीसैट इज मोर ऑफ अ रेस अगेंस्ट टाइम, whereas the GS section is more of conceptual clarity. CSAT में किसी को 200 लाना है नहीं, लेकिन GS में आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा है, because that will determine the merit and on the basis of that only you will get your call for the civil services main written examination, right? So एक चीज आप ध्यान में रखो, that the entire idea of this program is to help you in improving your scores. It is not designed to teach you anything new apart from some things related to current affairs. Got it? This program has been designed to help you improve your marks in the final examination. Got it? तो इसको एक प्रिपरेशन की तरह लो। ये मत सोचना कि आज मैंने क्लास तो किया, फिर जो 25 क्वेश्चन मिले मेरे को, मेरे सिर्फ 5 ही हुए, 20 तो गलत हो गए, तो होने दो। आज हम गलती करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर, so that we do not commit any mistake on that day. Got it? So you will get all the material as far as the preliminary examination is concerned. The current affairs has been covered across the years also when it comes to schemes and all those kind of things. तो स्कीम्स पे भी क्लासेस होंगी अलग से, बजट सर्वे पे भी क्लासेस होंगी, मैप मार्किंग पे भी होगी, सीसैट में भी होगा, और करंट अफेयर्स भी अलग से कवर किया जाएगा। बट बेसिक्स पे अभी ध्यान दो शुरू में। अगर बेसिक्स सही नहीं है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। बहुत सारे लोग हैं जो करंट पे इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो बेसिक्स सही नहीं करते। और अगर समझ लो किसी ने करंट अफेयर्स को बहुत कॉन्सेंट्रेट किया एंड दैट ईयर देयर वर 30 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स और 30 के 30 उसके सही। Do you understand that? But in the rest 75, because he would be forced to attempt them. Why? Because others are also attempting. आपको पता है कि करंट का कोई क्वेश्चन हो सकता है सब ना अटेम्प्ट करे, लेकिन आपको पता है कि अगर फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आया है
या ज्योग्राफी किसी बेसिक एरिया की, इकोनॉमी के या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के किसी बेसिक एरिया से क्वेश्चन है, तो सभी करेंगे, मोस्टली करेंगे. इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन बुद्धिज्म, chance is most of the people will attempt it. So that psychological pressure will force you to attempt it. और अगर आपका रिविजन सही नहीं है, if you are not well versed with the content, then you will suffer. But lastly, I would like to say that do not fear the examination. Phobia only causes losses in your life. Have fortitude, have a kind of courage that this examination is easy. और एक समझ लो एक वॉर है, और वॉर के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए, वेपन्स चाहिए, बट उससे भी ज्यादा क्या चाहिए वॉर जीतने के लिए? करेज. You understand that? So you should be courageous that this is possible. So many people have done this, and why can't you? So the only thing that I expect from you people is that you will work hard, you will not miss the classes, and you will solve the question on a daily basis. If you face any doubt in and around the questions, there will be doubt counters. Because you see, अगर आप बोलते हो अगले दिन आके कि सर पिछली क्लास में ये वाला क्वेश्चन जो है ये मुझसे नहीं हुआ, तो टीचर आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. अंडरस्टैंड द problem of the person as well, because he has got only 4 classes to cover everything. तो ये झट से जैसे एक रिवीजन होता है वैसा है. और जब आप ये कोर्स कर लोगे, नियरली 2 months का कोर्स है, 21 अप्रैल के आसपास खत्म हो रहा है ये, आप जब ये कर लोगे, then you will see the change in your preparation. You will be feeling much more confident, and it is finishing almost, in fact, a little bit more than a month ahead of the actual examination. So it will give you ample amount of time to revise everything as well. तो CSAT भी हो रहा है, करंट अफेयर्स भी हो रहा है, डेडिकेटेड मॉड्यूल्स भी हो रहे हैं, GS सेक्शन भी हो रहा है, सेक्शनल टेस्ट भी हो रहा है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो रहे हैं. एंड एट द एंड देयर विल बी 10 mock tests, means 5 GS and 5 CSAT. Apart from this, you should also take a look at the last 10 years question papers, because many times many questions would be repeated. Attention span अपना lose मत करना, क्योंकि चीजें आपकी more or less पड़ी हुई हैं. Like say for example, देखो आपने सबने पॉलिटी पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन सुनो. Right to vote and to be elected in India is a, and these are the options: fundamental right, natural right, constitutional right, legal right. समझ में आ रहा है? और अगर आप देखोगे क्वेश्चंस मोर और लेस इसी तरह के ही होते हैं. बट आप कंफ्यूजन कब होगा आपको? अभी आप कोरस में आंसर कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कोई लोग बोलते हैं लीगल राइट, तो आपका ब्रेन कहीं ना कहीं वो करेक्ट कर लेता है खुद को कि ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द आंसर बाय द वे, द पॉइंट इज जो भी है. लेकिन जब आप हॉल में होते हो तब लगता है कि ये तो राइट टू वोट मतलब ये फंडामेंटल राइट हुआ, बट ये तो एक नेचुरल राइट भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और लीगल राइट भी है. ऐसा लगने लगता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ भी नहीं आंसर कर पाते हैं. लोग पहले सोचते हैं ए होगा, फिर सोचते हैं बी होगा, फिर सोचते हैं नहीं ये तो डी है, पक्की बात है, और लगाते हैं सी पे. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये इतना वाइड एरे ऑफ कंफ्यूजन जो है वो खराब कर देता है. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर एज इफ यू आर द वर्स्ट. ये मान लो कि ये पूरी क्राउड जो भी बैठी हुई है और जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, इनमें सबसे जो कमजोर हूं वो मैं हूं, ये मान लो. ये आपका प्रेशर हटा देगा इमीडिएटली. और कई लोग बोलते भी है ना कि यार तू तो फोड़ देगा इस बार. ये स्टेटमेंट से बचो, ठीक है? बिल्कुल ये सोचकर चलो कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं सिर्फ यहां सीखने के लिए आया हूं और रिवीजन करने के आया हूं. जब एग्जाम में बैठो तब सोचो कि मैं हर क्वेश्चन हैंडल कर लूंगा. आई एम द बेस्ट. The day of your performance, you should feel you are the best. The problem is, while we are preparing, we feel we are the best. While we are performing, we understand we are the worst, or at least one among the worst. So that happens because of lack of revision. So basics पे बहुत ध्यान दो शुरू में, because basics ensure कर देंगे आप select हो रहे हो या नहीं, preliminary examination में आपको mains का call आ रहा है या नहीं. और उसके ऊपर जो भी है वो, जैसे आपने कभी आप कभी KFC, मैकडॉनल्ड्स, ऐसी डोमिनोज ऐसी जगह गए हो? मतलब अच्छी जगहें होती हैं ये.
आई थिंक यू पीपल हैव नॉट सीन दोज एरियाज, बट मे बी बिजी विद द प्रिपरेशन. बट ये एरियाज जो होते हैं, यहाँ पे आपको एक कल्चर मिलेगा, एड ऑन कल्चर. आपने देखा है, वो बोलते हैं कि इफ यू वांट दिस, विल ऐड दिस आल्सो. सो करंट अफेयर्स इज लाइक दैट, एड ऑन. डू यू गेट इट? सो 3 थिंग्स ये ध्यान में रखना. पहला, बेसिक्स एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. और दूसरा, सीसैट अच्छे से होना चाहिए. और थर्ड, करंट अफेयर्स पे पकड़ तो होनी चाहिए, बट ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए. देखो, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको भी पता है, XYZ institutions releasing PQR magazines. Do you understand that? And everybody collecting so many magazines released by different institutions. आपको क्या लगता है, जिसने मैगजीन बनाया ना, उसको भी पूरा नहीं आता? समझ में आ रहा है? और यही सच है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, यू आर नॉट अ सुपर कंप्यूटर. हाउ कैन यू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन? बट वो जब आपके सामने आएगा, तब अगर आपने प्रिपेयर किया है, तो ह्यूमन ब्रेन में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इट रिमेंबर्स. इट रिमेंबर्स. अगर आपका मन था, जब आप अपना काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा हॉल में. जैसे होता कैसे, जैसे हम ATM जाते हैं, कई बार लोग अपना पिन भूल जाते हैं, बट जैसे ही आपने कार्ड डाला, अपना पिन ऑटोमेटिकली याद आ जाता है. क्यों? क्योंकि आपने कई बार उसको एंटर किया है. हाँ, अकाउंट में क्या है, दैट्स एन ऑलटुगेदर डिफरेंट डिबेट, बट पिन तो नहीं भूलते ना. वैसा ये करंट अफेयर्स, वैसा ही है करंट अफेयर्स, कि अगर आप उसको जितनी बार पढ़ोगे, वो मामला उतना आसान होता जाएगा. Do you understand that? So I'm repeating one more time what we will be doing under this course. First, you will have, for the first 4 days of a week, you will have 2 subjects running parallelly, and we will finish them. Focus is on hotspot sections, but the booklets are more or less comprehensive. Do you understand that? So at the end of every class, you will get 25 questions emanating from the topics that have been covered in that class. Obviously, if you have doubts around the questions, there will be dedicated doubt counters to handle your doubts. Do you understand that? At the end of the 4 days, there would be, for the next 2 days, there would be sectional tests related to that area. In that way, we will be finishing all the basic areas. Current affairs, yes, maybe, अगर उसके around कुछ हो जाए, तो वो आपको बता दिया जाएगा, but focus will be on the basics. At the end of the basic areas, then there will be some dedicated classes like map marking, budget survey, current affairs, and CSAT. Do you understand that? CSAT बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना, क्योंकि CSAT टफ नहीं है, CSAT मोस्टली ट्रिकी है, और उसमें आपको एक टाइम फैक्टर है जो आपको परेशान करता है CSAT में. इट्स नॉट द चैलेंज ऑफ द क्वेश्चंस. और समझ लो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो. हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड? रेज योर हैंड्स. सो कई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोगों को ये लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये थोड़ा टफ सेक्शंस है. अगर मुझसे पूछोगे ना, तो सबसे आसान है और श्योर शॉट है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में जो आंसर है वो पक्का है, आप श्योर हो उसमें. लेकिन पैराग्राफ में श्योर नहीं हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. And UPSC gives what? In its question paper, if you have read the instructions, it says, choose the most appropriate answer. So there can be more answers to the same question, but UPSC is asking for the most appropriate answer. Do you understand that? और एक mindset कैसा होना चाहिए preparation को लेकर? ये नहीं कि मैं तो सिर्फ 50 attempt करूंगा या 70 attempt करूंगा, उसमें मेरे इतने सही हो जाए तो मेरा हो जाएगा. ये एक डरपोक सोच है. मतलब ये ऐसा है कि हारेंगे नहीं, ड्रॉ हो जाए भले. समझ में आ रहा है? जीत के लिए जाओ, हार जाओ भले, पर हारोगे नहीं. यू मे लूज अ बैटल बट यू विल नॉट लूज द वॉर. जीत के लिए जाओ. इट मीन्स ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और वो डर हटाओ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ही यही है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करूंगा, कुछ भी हो जाए. 40 क्वेश्चन कर लिया, 50 कर लिया, 60 कर लिया, काफी है. सीसैट में भी उतना ही करूंगा जिससे मैं सेफ स्कोर पे आ जाऊं. एम ये होना चाहिए 100 के 100 आउट ऑफ जीएस, 80 आउट ऑफ 80 इन सीसैट. आपको लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं सर, बट ये सच है. सोच यही होनी चाहिए. कर पाओ कितने वो अलग बात है, बट सोच यही होनी चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100 जीएस अटेम्प्ट होगा और 80 आउट ऑफ 80 सीसैट अटेम्प्ट होगा. अगर आप देखोगे वो सारे लोग
जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप देखना उनके अटेम्प्ट ओवर 85 तो होंगे ही होंगे, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी आ जाए। और एक चीज देखो, फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं, जो एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, वो मतलब ऐसा है जैसे पहली बार जिसका सिलेक्शन होता है किसी गेम में, उसको टेंशन नहीं होती, उसको मालूम है कुछ भी कर लो। लाइक आर यू अवेयर अबाउट ईशान किशन? उसने 200 बनाया, लेकिन उसको मालूम है मैं बाहर बैठूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा आएगा तो मैं बाहर बैठूंगा, तो वो बिंदास खेलता है। समझ में आया? तो वही खेलते हैं फर्स्ट टाइमर्स। फर्स्ट टाइमर्स को पता है 5 अटेम्प्ट पड़े हुए हैं, तो जितना करना है करो, तो वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। तो अटेम्प्ट तो सभी अच्छा करेंगे, और जो अच्छे से प्रिपेयर है वो एनी हाउ अटेम्प्ट करते हैं। आप सोच लो, 5 से 6 लाख में सिर्फ 10 से 13,000 ये है जो मेंस लिखने जाते हैं, उसमें से 3,000 2500 समवेयर अराउंड एवरेज, आई एम सेइंग अक्रॉस लास्ट डेकेड, जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें से करीब 700-800 जो सिलेक्ट होते हैं, उनमें से करीब 100 जो IAS बनते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो अगर वहां तक पहुंचना, देखो गेम बहुत आसान हो जाता है एक बार प्री क्लियर हो जाए। लाइक द इंटरव्यू प्रोग्राम इज गोइंग ऑन एंड आई मीट सो मेनी एस्पिरेंट्स हु हैव कम ओवर फॉर द मॉक इंटरव्यूज। उनमें कई सारे लोग हैं जिनका 4th अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम दे हैव क्लियर्ड प्री एंड दे हैव रीच्ड अप टू द इंटरव्यू स्टेज। तो एक बार अगर प्री क्लियर हो जाए, प्री एक हर्डल हो गया, एंड आई अंडरस्टैंड, आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस एज फार एज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, बट कुछ कर तो नहीं सकते, अब जैसा है जो है, वी हैव टू फेस द रियलिटी। मुझे लगता है कि पेपर का क्वालिटी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, इट इज मोर फैक्ट ड्रिवन, इट शुड बी मोर कॉन्सेप्चुअल ड्रिवन, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। एक बात याद रखना, फैक्ट में कोई भी श्योर नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्स आपकी मेमोरी पे बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में गलती मत करना, और वो तभी होगा जब आप रेगुलरली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस अराउंड द टॉपिक। क्योंकि आप कितना भी समझ लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे एक क्वेश्चन, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मामला। अच्छा देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है आपने सबने? So look at this question. Consider the following statement with respect to Mahalwari settlement. The Mahalwari settlement was introduced in Punjab, the central provinces and parts of northwestern provinces. Pehla question, pehla statement. Dusra, the responsibility of paying the revenue rested with the entire village community under this system. Third, Mahalwari system eliminated middlemen between the government and the village community. तो अब देखो, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 2-3 बार महलवारी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, तो अगर उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है महलवारी से जो किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई इश्यू नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यूपीएससी देखो, जैसे आपको पता है कि आप वीडियो गेम्स खेलें आप लोग, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो नहीं लेने वाले होते हैं, कि आपको पता है कि आप वो कॉइन लेने जाओगे तो आपका गेम वहीं एंड हो जाएगा। सो यू मेक सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एट दैट पॉइंट। इवन शिवाजी made strategic retreat, and that's why he is a great general, military general, because he understands how to fight a war. Samudragupta, are you aware, has never lost a war. He also followed strategic retreat. पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे हाथ डालना है, कहाँ मुझे हाथ नहीं डालना है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जैसे कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा कि पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहां पे गड़बड़ मत करना। और जनरली मैंने देखा है जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी में गलत करके आते हैं, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो हिस्ट्री में, PSIR वाले पॉलिटी में गलत करके आते हैं, तो जो ऑप्शनल है उसमें गलत करके आते हैं। क्यों पता है आपको? ओवर थिंकिंग। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सेबी के बारे में, लेकिन आप सोच रहे हो RBI, आप सोच रहे हो ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, you're thinking about IRDA, Insurance Regulatory Authority, Development Authority. Do you understand that? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम नैरो सोचो और चले जाओ। Take your time, take a pause, read the statements very carefully, and after that you attempt the question. और ऐसा करोगे तो चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है,
So that is what I wanted to talk with you people.